वेलकम बैक। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्लामाबाद के F9 पार्क में अब आपके सामने आ रहा है हमारे अजीम रहनुमा मुस्तफा केमाल अतातुर्क का पेरूकार, जिसने कहा था मुस्तकबिल आसमानों में है। Ladies and gentlemen, please be ready for the signature maneuver. Aerobatic is going to come straight ahead of you to perform pitchback sliceback maneuver combined by rolls. So far so good. Months of preparation, thousands of trainings, skill, speed and perfect talent are condensed in this maneuver. Legendary show is just starting right now. For once more, I present with honor 2017 Solo Turk first demo pilot, Captain Erhan Günar. Solo Turk is going to come perform slow motion turn, which requires a great flight control ability of aircraft, and during it will circle around itself by having a continuous command in all three axes. Solo Turk will simulate the slowest roll of a military jet aircraft with precise control inputs. Havadino Hazrat, iş çose, ap yezcan seken geyike, ek mukammel or behtrin, muzahira kister hahuna caye. Snake pass is one of the hardest maneuver for F-16. The thrust, which keep our plane in the sky, is at the minimum level during this pass. As the joy of flying collects the raw fight rope in your heart, it feels as the Solo Turk takes you by the hand through the clouds. Pakistan, Muhammed Ali Jinnah ka mulk hai. Pakistan, Turki ka behtrin sati hai. Pakistan, dosti aur bhaichare ki behterin aur ala misal hai. Is coming from your left side. Ladies and gentlemen, this is Solo Turk. And now, fighter sprint down forward with sharp turn, which means positive 90 turn. He will be exposed to 9 times bigger gravity than normal. If we have a camera look into his face inside the cockpit, you will realize what he looks like 40 years later. He will have dramatic changes in blood pressure, heart rate and condition of organs inside the body. To challenge all these obstacles, he has to wear for spectacular way. Meherbani, auf Solo Turk, hesabı das muzahire, salute on those horn. Solo Turk, Abkeson not ski, Base Raftar, or Sofki, Blondistie, आपके सामने से गुजरेंगे, जो कि आवाज की रफ्तार के बहुत करीब है. Solo Turk will now pass in front of you, 100 feet at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of the sound. And calling out to spotters, catch me if you can. Astonishing, you will watch material. The metal that's sharpened with the passion of power. And rock to the same.
After demonstrating high speed, you will see Solo Turks fly at the minimum speed possible for an F-16 aircraft. For ambitious photographers, it's time for you to get your camera ready. Now the pilot extends the air brake. If you look carefully enough during this pass, you may see the pilot waving at you. And after this pass, proceeding a powerful climb, it's nose to 90 degrees up and he will still accelerating. For once again, I present with honor 2017 Solo Turk. First, demo pilot, Captain Erhan Günar. Pakistan, India, Turkey. आपकी भरपूर तालियों में Solo Turk. Aerobatic is exciting adventure that involves extraordinary movement. In fact, it is inexpressible, but you can just experience it with Solo Turk today. Proceeding a powerful climb, it's close to 90 degrees up and still accelerating. For the next maneuver, I claim that you can only see this roll by Solo Turk. Still, I couldn't understand how he can do this Solo Turk roll. Please focus on this maneuver and the perfection of the acrobatics. Please hang on tight. Please be ready to close the pass of our pilot. During the pass, you will see all details inside the cockpit as if you are sitting in Solo Turk cockpit. Ladies and gentlemen, please pay attention. Unprecedented design of Solo Turk. He is coming for 8-point roll. In every roll, you can see our unique design. Golden Eagle is taken by Turkish Air Force streamer and refers to Turkish people's freedom. The star, which is next to Golden Eagle, Solo Turk, Turkey and Pakistan, will the star of the 21st century. And at the bottom, crescent and star symbolize our national flags, Turkey and Pakistani flags. Please be ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the last 8. Soldiers will start the next maneuver in the upside down position at a very low altitude, which causes the blood in the body to run through the head. Then it will circle around itself while it's in front of you. At the inverted flight, F-16 can fly just 30 seconds. Because of the fuel tanks do not feed in the engine during this pass, so it is really critical. Yes, आपको बहुत जल्दी तेज और महारत के साथ किया जाएगा. तैयार हो जाइए देखें. And yes!
शुक्रिया अदा करने के लिए सोलोटुर्क जहाज को खास अंदाज में लाकर सलामी पेश करेगा. To thank all of you, Solarturk will salute you by the nose of the plane. Each country has its own story, a kind of existential identity, a language and spirit. Pakistan is the more the loving embrace of a mother, which is perhaps why it harbors such a diversity. Solarturk is flying for the 7th independence anniversary of Pakistan. The show with high-level concentration, we will have vertical climb maneuver, which is combined by rolls. We'll maximize on your memories. Inspiring locations, mind-broadening experiences, and lots of reasons to travel Turkey await you. By this show, we invite all of you as a guest. Turkey is the right destination for those who want to enjoy the smell of Asian flowers and the beautiful blue seas. He is ahead of you right now. Abzappi, Hatilakar, Türk pilot, Sedostikari Istarkari. The friendship of Turkey and Pakistan. Solarturk is believed for 7th independence anniversary of Pakistan. And thank you very much for all spectators. Thank you very much for your enthusiastic applause. And as the last message, Jive Jive Pakistan, Jive Jive Turkey. जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे तुर्किया, जीवे जीवे पाक तुर्क दोस्ती. ख़वातीनो हजरात, ये शहर है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा. सोलोटर्क की शानदार परफॉर्मेंस का खुमार अभी छटा नहीं कि अब आपके सामने दुनिया की चंद बेहतरीन एरोबैटिक्स टीम्स में से एक पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवा चुकी और आज हमारे दरमियान मुस्लिम बरादरी की बाहमी यगानगत को मद्देनजर रखते हुए इस आज़ादी की तकरीब का हिस्सा सऊदी अरब की एरोबैटिक्स टीम सऊदी हॉक्स अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ आने वाले हैं. Ladies and gentlemen, despite their hectic and busy schedule all around the globe, Saudi Hawks wanted to come to Pakistan just for the Independence Day celebrations. And now I will shift the controls to squadron leader Simon Ray, who is going to describe the aerobatics profile for the audience. Mr. President, Your Excellencies, Chief of the Air Staff, VIP guests, ladies and gentlemen, boys and girls, Salam Alaikum. Thank you very much for that kind introduction. And on behalf of the Royal Saudi Air Force display team, the Saudi Hawks, I would like to welcome you to this afternoon's display. We're very honoured to be here as part of today's celebrations for Pakistan's 70th Independence Day. मौजूद ख़वातीनो हजरात, अपने दिल थामे रखिए कि किसी भी लम्हे सऊदी हॉक्स अपनी पूरी आबोताब के साथ वेन्यू पर नमूदार होने वाले हैं. So ladies and gentlemen, it's my job this afternoon to guide you through the display, make sure you're looking in the right direction to capture all the action, and also give you some information about the team, its pilots and the aircraft we fly.
So currently the team are positioned behind you at the large hill. You can see behind you the team are back there at the moment, and I'll let you know when they're about to fly over your head and start the show. The display today, though, consists of two very distinct halves. During the first half, you'll see the team perform as one unit, changing formation shapes, looping and rolling. During the second half, the formation splits into two sections, allowing the team to carry out high-energy manoeuvres and dynamic crosses. So, ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to the Royal Saudi Air Force National Display Team, the Saudi Hawks. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपके सामने अमूदी सिमत में परवाज़ करते हुए Saudi Hawks. The team have arrived in a formation we call Battle, which, as you would have seen, looks like a very large V. As the aircraft climb, the bosses called them into shield formation. ख़वातीन और हज़रात, सऊदी हॉक्स अपनी तमाम तर मसरूफियात तज कर पाकिस्तान का जश्न यौम आज़ादी मनाने आए हैं। और ये देखिए, एक खूबसूरत अंदाज में फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए सऊदी हॉक्स। The Saudi Hawks are the public face of the Royal Saudi Air Force. The team was formed in 1998 at Dhahran Air Base. They were formed to display at the 100-year anniversary celebrations of the forming of the modern Kingdom of Saudi Arabia. Since the team's creation, the Saudi Hawks have displayed at many official and public ceremonies inside and outside the kingdom, representing the professionalism, excellence and dedication of the Saudi Armed Forces and its personnel. So to your right, the bosses now changed the team into diamond formation for the diamond roll. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं जानिब रखिए। सऊदी हॉक्स इंतहाई नीची परवाज़ करते हुए और इंतहाई करीबी फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए अमूदी सिम्त में परवाज़ कर रहे हैं। The BAE Systems Hawk Mark 65 aircraft. This aircraft has a Rolls-Royce Adore engine, produces 5,700 pounds of thrust. This makes the aircraft very manoeuvrable, allowing it to pull up to 8G. Today's show, or most of it, is flown at around 360 knots or 650 kilometres an hour, which is right in the middle of the aeroplane's speed envelope. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हॉक तैयारों से निकलता ये हरा और सफेद धुआं इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आज जश्न आज़ादी में सऊदी अरब भी हमारे साथ है। So if you cast your eyes to the left-hand side now, the bosses called the team into helix formation for a manoeuvre down the line we call the helix. I'll let you listen to the team. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, निगाहें बाएं जानिब मरकूज़ रखिए। सऊदी हॉक्स अपने अगले मनूवर की जानिब बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, एक इंतहाई दिलचस्प नजारा जो आज तक आपने सिर्फ अपने टीवी की स्क्रीन पर देखा, आज यहां आपके सामने इस्लामाबाद की फिजा में। Which were rolling behind the other aircraft, will catch the formation up now, and the boss, as he comes left, it will move the formation into a shape we call tiger. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, सऊदी हॉक दाएं जानिब से अपने अगले मनूवर की तरफ बढ़ते हुए So from the right-hand side, the team approach for the Tiger Bend. और ये देखिए, आपके दाएं जानिब से
सऊदी हॉक्स सफेद धुआं छोड़ते हुए अपने अगले मनूवर की जानिब बढ़ रहे हैं। और एक शानदार अंदाज में इंतहाई नजदीकी फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए आपके सामने एक कोऑर्डिनेटेड टर्न का मुजाहरा पेश करते हुए सऊदी अरब की एरोबैटिक्स टीम सऊदी हॉक्स। So as the team continue the bend in front of you, the boss will shortly call them into Phoenix formation. You'll see Saudi 6 and 7 move to the outside of the formation. Although this looks like a pretty easy formation to fly, this is the most difficult position that we fly, as all the pilots flying on the boss's wing are looking over their shoulders to fly formation. वेन्यू के एंड सामने अपना टर्न मुकम्मल करते हुए सऊदी हॉक्स एक इंतहाई खूबसूरत फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए। As the team rolls out, you'll see Saudi 6 and 7 turn their smoke off and they move in behind the boss. I'm sure you've already worked it out, but the boss leads the team from the front and uses radio commands to maneuver the formation around and change formation shapes safely. खवातीनो हजरात, आपको बताता चलूं कि किसी भी फॉर्मेशन की कामयाबी उसका पूरा इन्हिसार उसकी लीडर की कमांड पर है। उस लीडर के विंगमैन जब बेखौफ व खतर होकर अपने लीडर की बात मानते हैं और उसके इशारे पर अपनी फॉर्मेशन तब्दील करते हैं तो वो एक खूबसूरत मिसाल बन जाती है। So approaching from the left-hand side, the team are just about to fly a Typhoon into Spear Loop. They've started this loop at 650 kilometres an hour. As they reach the top at 1 mile in the air, or 6,000 feet, the aircraft will slow down to 200 knots, almost no G-force in the top of the loop. Then as they accelerate down at the backside, the G-force comes back on and the speed increases again. और खवातीनो हजरात, आपके सामने इस पाक फिजा में सऊदी हॉक एक ग्रुप का मुजाहिरा पेश करते हुए वेन्यू के दाएं जानिब अब जा रहे हैं। All of the pilots in the team come from a fast jet background and have all flown on operational frontline squadron. The team support staff are drawn from a wide variety of engineering, logistics and administrative backgrounds and play a crucial role in keeping the team safe while in the air and on the ground. मेरी तमाम F9 पाक के हाज़रीन से गुजारिश है कि जहाज़ों के इस डिस्प्ले के दौरान बराए मेहरबानी गुब्बारे फिजा में मत छोड़ें, वो जहाज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। So this is the last maneuver of the first half and it's called the 10th break. खवातीनो हज़रात, अपने पहले मुजाहिरे के आखिरी मनूवर की जानिब बढ़ते हुए सऊदी हॉक आपके सामने एक खूबसूरत बॉम्बर्स का मुजाहिरा पेश करेंगे। और ये खूबसूरत बॉम्बर्स का मुजाहिरा आपके सामने इस्लामाबाद की इस फिजा में सऊदी हॉक मुख्तलिफ सिमतों में परवाज कर गए। जरा ठहरिए खवातीनो हजरात, ये तो अभी पहला हिस्सा था। सऊदी हॉक्स अपने प्रोफाइल के दूसरे हिस्से की जानिब अब बढ़ने लगे हैं। दिल थाम लीजिए कि ये वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से से ज्यादा खतरनाक और दुश्वार है। So ladies and gentlemen, that's now the end of the first half and the boss is repositioning the formation crowd front. The next shape you're about to see is called the Saudi
logo. This is a symbol of Saudi Arabia and is a palm tree with crossed swords. The palm tree represents the wealth of the people, while the swords signify the strength and justice of the kingdom. मौजूद ख़वातीन हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के एंड सामने रखिए। सऊदी हॉक अब आपके सामने एक ऐसा मुजाहिरा पेश करने वाले हैं कि आपके दिल धक से रह जाएंगे। In February 2012, the team entered the Guinness Book of World Records for this manoeuvre by creating the largest sky drawing by a formation jet aerobatic team. The logo was measured at a total area of over 53 million square meters. So get your cameras ready, look directly in front of you for the Saudi Hawks logo. और ख़वातीन हज़रात, वेन्यू के एंड सामने से अमूदी सिमत परवाज़ और ये दो जहाज़ों ने क्रिस क्रॉस हरे रंग के साथ और सफेद रंग सऊदी अरब का लोगो बनाते हुए सऊदी हॉक्स। Now, as I mentioned earlier, the formation splits into two different elements during the second half. The two aircraft now descending to your left and your right are members of the synchro pair. To the right, Saudi 6 Major Sulami, and to the left is Major Mohsen. The synchro pair are responsible for all the high G manoeuvres and have a very tough job of making sure they cross exactly in front of you each time. और ख़वातीन हज़रात, आपके सामने क्रिस क्रॉस का एक खतरनाक मुजाहिरा। और ये देखिए किस खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान के सदर को सलामी पेश करते हुए सऊदी हॉक्स ने एक इंतहाई खतरनाक और दुश्वार मुजाहिरा पेश किया। So with only 100-foot separation after each cross, this is the synchro carousel. मौजूद ख़वातीन हज़रात, अपनी निगाह इस तैयारे पर रखिए कि ये दोबारा से उसी खतरनाक मुजाहिरे की जानिब बढ़ रहा है। As synchro vacate to the left and right now, if you cast your eyes directly out in front of you again, you'll see the boss approaching with a 5 ship. The aircraft at the back of the formation is Saudi 5, Captain Fala. Shortly you'll see Fala roll his aircraft around the other 4 to make an infinity symbol, or figure of 8, as you can see now. Once again, get your cameras ready as the aircraft approach for the infinity break. और ख़वातीन हज़रात, निगाहों को वेन्यू के सामने रखिए अपने अगले मनूवर की जानिब। ये सऊदी हॉक्स का इंफिनिटी ब्रेक। Once again, ladies and gentlemen, if you look left and right, you'll see synchro joining from behind the crowd. The next maneuver is called the opposition wave into dragon. और ख़वातीन हज़रात, वेन्यू के दाएं और बाएं जानिब से बढ़ते हुए एक दूसरे की तरफ। Now, if you look to your left in the distance, you'll see the large skyscraper. It's Saudi 6 coming back towards you for the Dragon. Where he's coming from, once this maneuver is finished, if you look where the green smoke is, you'll be able to see the boss coming from that direction as well. और ख़वातीन हज़रात, दाएं और बाएं जानिब से एक दूसरे की जानिब से फिर से बढ़ते हुए एक और खतरनाक मुजाहिरा। जितनी बारीकी से ये मनूवर सरअंजाम देना इन हवाबाजों की कमाल महारत का मुंह बोलता सबूत है। So keeping your eyes on where the green smoke was turned off, you'll shortly see the boss approaching with Saudis 2 and 3, with number 4 positioned behind him. He'll call the smoke on and then command number 4 to roll around. This maneuver looks great, it's really fun to fly, and we call it the flag roll. और ख़वातीनो हज़रात, इस्लामाबाद की फिजा में मुख्तलिफ रंग बिखेरते इतनी खूबसूरत फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए सऊदी हॉक्स का ये नज़ारा आपकी निगाहों के ऐन सामने। Smoke will shortly go off from the flag roll. Again, cast your eyes out to the front
of your seats and you'll shortly see 2 aeroplanes pull up in front of you. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के बिल्कुल सामने रखिए कि किसी भी लम्हे सऊदी हॉक अपने अगले मुजाहिरे की तरफ बढ़ रहे हैं। This synchro maneuver needs no explanation and is certainly the most romantic part of our show. This is the synchro heart and speed. और ख़वातीन और हज़रात, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या शक्ल फिजा में बना रहे हैं? जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक दिल की शक्ल इस पाक वतन के इंडिपेंडेंस डे की खुशी में बना रहे हैं। और देखिए किस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये अपनी फॉर्मेशन मुकम्मल की। और वो देखिए एक सऊदी हॉक उसी दिल के अंदर से एक तीर के अंदाज में अपनी अगली शक्ल बनाता हुआ। So I hope you'll manage to get a good picture of the heart there. Now again, keep your eyes on the 2 aeroplanes left and right of you. Synchro positioning again down the line for the avalanche and slingshot maneuver. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाहों को वेन्यू के दाएं और उसके बाद बाएं जानिब रखिए। 2 सऊदी हॉक एक दूसरे की तरफ इंतहाई नीची परवाज करते हुए बढ़ रहे और एक खूबसूरत अंदाज में ये आपकी निगाहों के सामने एक क्रिस क्रॉस मैनूवर का खतरनाक मुजाहिरा एक बार फिर सऊदी हॉक की तरफ से। Synchro vacating crowd front. Now this smoke will go off. If you look to your right hand side now, you'll see the boss arriving with 5 aircraft to fly down the line for a maneuver we call the rollbacks. The aircraft as pairs pull up and out of the formation and roll around the aircraft outside them. As this is happening, the aircraft on the outside fill the hole that the aircraft on the inside has just left. This is a very difficult maneuver to fly, requires the pilots not only to be accurate inside their aircraft, but also talk on the radio while flying upside down. सऊदी हॉक्स की जानिब से एक जबरदस्त मनोवर आपके सामने पेश किया गया। हरे और सफेद रंग का धुआं छोड़ते ये सऊदी हॉक आज इस जश्न आज़ादी के फंक्शन में पाकिस्तान का साथ देते हुए इस्लामाबाद की फिजाओं में और F9 पार्क में हाज़रीन की कसीर तादाद जिसमें शामिल नौजवान, बच्चे, ख़वातीन और मोहम्मद अफराद इस एयर शो से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। Once again, if you look out in front of you now, you see synchro positioning for the vortex and cyclone. और ख़वातीन और हज़रात, वेन्यू के एंड सामने एक खूबसूरत अंदाज में ये क्रिस क्रॉस का एक खूबसूरत मुजाहिरा सऊदी हॉक्स की जानिब से। आपकी निगाहों के एंड सामने दोबारा से खतरनाक इतने करीब से गुजरते हुए ये सऊदी हॉक अपनी महारत का सबूत दे रहे हैं। So on your right hand side, number 6 has just turned his smoke from red to white. This is pretty simple for the next maneuver to be able to find the formation. There's number 6 who's turning towards us. If you follow his aircraft, he will lead you directly towards the boss. We call this next maneuver the goose. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अपनी निगाह इस अकेले तैयारी की तरफ रखिए और उसके बाद बाएं जानिब से बढ़ती फॉर्मेशन की तरफ रखिए एक खतरनाक मुजाहिरे के लिए। उस फॉर्मेशन के अंदर से अमूदी सिंध में परवाज करता ये सऊदी हॉक का एक खूबसूरत मुजाहिरा।
ये खूबसूरत धुएं से लकीरें बनाते सऊदी हॉक्स पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती का इजहार करते हुए. So the air brakes have come in now, and the boss is pulling up for the formation into a steep climb for number 6 and 7 to then join for the final manoeuvre of our show. Mic check. Select. Solid copy. Basic. और ख़वातीनो हज़रात, सऊदी हॉक्स को अपनी निगाहों से ओझल मत होने दीजिएगा कि ये अपने अगले मुजाहिरे की तरफ बढ़ रहे हैं. So the final manoeuvre of our show is called the Bomb Burst, and is your last opportunity to take a photo of the team. Ladies and gentlemen, from the boss and the rest of the team, it only leaves me to say thank you for having us here in Islamabad this afternoon. We have thoroughly enjoyed displaying for you, and we hope you've enjoyed watching our show. I also hope you enjoy the rest of today's celebrations. So finally, in front of you as the smoke comes on in the distance, representing the Kingdom of Saudi Arabia and the Royal Air Force, the Saudi Hawks. और ख़वातीनो हज़रात, वेन्यू के एंड सामने से बढ़ते हुए अपने आखिरी मनूवर की जानिब सऊदी हॉक्स इस वक्त आपके सामने एक बॉम्बर्स का मुजाहिरा पेश करेंगे. और ख़वातीनो हज़रात, वेन्यू के एंड सामने से सऊदी हॉक्स, और ये एक खूबसूरत बॉम्बर्स का मुजाहिरा आपकी निगाहों के सामने. ख़वातीनो हज़रात, इस तमाम मुजाहिरे के बाद सऊदी हॉक अब वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं. सदर पाकिस्तान. शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा जारी है और पाक फ़ज़ाइया की ये तकरीब अभी जारी है. एक बार फिर